Let's start. Now we will discuss the form and different methods of preservation of starter culture. So the fermentation process of any cultured product relies entirely on the purity and activity of the starter culture, provided that the milk or growth medium is free from any inhibitory agent, as we have already discussed in the previous lecture. That is inhibitory agents like antibiotic and bacteriophages. The presence of these substances may uh, inactivate the starter culture. We have also discussed the traditional method for production of bulk starter culture, liquid culture, and this liquid culture traditional method is time consuming and it requires skilled operators and may leads to contamination by bacteriophages, which is one of the major hazards in the industry, but it is still widely used. So uh, in spite of that, research work has been intensified in this area to overcome various problems and development in this field that have focused on the areas of starter preservation and concentration. So an ideal starter culture must have contained the maximum number of viable organisms, and it must be highly active under production and condition in the dairy, and it must be free from contamination. So this provided that culture inoculum is carried out under aseptic condition and growth is initiated in a sterile medium. Foster suggested that one of the following principles must be adopted in order to maintain activity, that is reducing and controlling the metabolic activity of the organism and separating the organism from their waste product, है ना. 1962 में मतलब जो हमारा एक आइडियल स्टार्टर कल्चर है उसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वायबल ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए, उसको जो भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें उसको एक्टिव रहना चाहिए एंड इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी कॉन्टामिनेंट्स. सो इन सारे बातों को ध्यान रखते हुए फोस्टर इन 1962 suggested that if we reduce and control the metabolic activity of the microorganism or separating the organism from their waste product, then we can decrease or we can minimize the inactivity of starter culture. So this reducing and controlling the metabolic activity of microorganism can be done in the refrigeration, while the separating the organism from their waste product is can be achieved only during the concentration and preservation of starter, that is during the production of concentrate active bulk starter either in a continuous fermenter or in a batch process or or for the direct to wet inoculation, that is DVI of a milk. So these are the various method of preservation of lactic acid bacteria or methods of preservation of starter culture. But before this, it is essential that the starter culture can be preserved in order to maintain the available stock of organisms, especially in case of starter failure. And successive subculturing can induce mutant strain that may alter the overall behavior and general characteristic of the starter. So dairy culture, you can obtain the dairy culture from various research establishment, educational college, culture bank organization, or commercial manufacturer units. So based on these methods, the various methods of preservation of lactic acid bacteria are: first, liquid starter. You can preserve the starter culture in the form of mother or in the bulk culture. Dried starter, that is the spray dried, unconcentrated form, or freeze dried or lyophilized, unconcentrated and concentrated freeze dried form, or in the frozen starter, that is the starter is frozen at minus 20 degrees centigrade or deep frozen at minus 40 to 80 degrees centigrade or ultra low temperature freezing at minus 190 degrees centigrade in the liquid nitrogen. So this is the typical starter culture preparation. You have already discussed it in the previous classes that first you bring the stock culture from the various organization, then you prepare the mother culture, then mother to feeder or intermediate culture, and then you add this starter culture into the bulk culture or in the bulk media, and then finally to the production tank.
or simply you isolate the stock culture, isolate or stock culture from the culture collection. And first, what you do, you just confirm the purity and identity of the starter culture. Then propagation in small volume, that is in the mother culture. Then you are adding you growth supplement for the propagation it into the large volume. Uh, that is the after mother, it will be the intermediate culture, and then it is stored in the concentrated in the form of centrifugation or in the filtrate form. So in that form, it is suspended in the carrier medium, packaged and freezed and stored. And this form is the frozen concentrated culture, or it is lyophilized, that is the vacuum dried and again packed. And that culture is known as the lyophilized culture, or it is some cryoprotectant is added to save it from the uh, frozen shock, and that culture is known as the frozen bulk culture. So we will study all these all these form of preservation of starter culture one by one. So first is liquid starter culture, and this liquid starter culture is most commonly used starter culture, and starter are normally preserved in small quantity, but to meet the required volume of any production line, a scallop system is required. So in a scallop process, you just what you do, you just bring the stock culture, then you make it mother starter culture. Uh, in stock culture, you are having very small quantity of starter culture, then you add it into the some larger volume, that is 100 ml. That culture is known as the mother culture. Then from mother culture, you just bring it to the into the feeder culture, and then feeder to the bulk culture. So at every stage, you are just scaling the number of starter culture or volume of starter culture. Just you can see from here to here, zero point 0.4 ml to 200 liter. So that process is known as the scallop process. Every time hang. So the working starter culture are maintained in autoclave condition, reconstituted antibiotic-free skim milk powder with either weekly or daily subculturing. And in cheese starter culture, the culture of Lactococcus lactis subspecies lactis, subspecies cremoris, and Lactococcus mesenteroides subspecies cremoris can be propagated up to 50 times without any fear of mutation. And sterile medium is inoculating at the rate of 1 ml per 100 ml of solution, and incubated at the rate at the 22 degrees centigrade or 30 degrees centigrade for 80 hour or 6 hour respectively. So, but however, that repeated subculturing of certain strain of starter culture may lead to the loss of plasmid. As already told you that during liquid culture, frequent subculturing may lead to some mutation or loss of some plasmid material. So that can affect the characteristic of starter culture. अरे यार ये बीच बीच में ज्वाइन करते हो फिर हैंग हो जाता है. Similarly, in yogurt starter culture, Streptococcus thermophilus and Lactococcus delbrucis subspecies bulgaricus are normally subcultured only 15 to 20 times as a safeguard against imbalance and to retain the ratio of cocci is to rod, cocci versus rod is to 1 is to 1. And incubation is carried out at 40 degrees centigrade for 3 to 4 hours and at 30 degrees centigrade for 18 hours using 2 ml or 1 ml per 100 of inocula respectively. But the starter culture in the liquid starter culture is affected by the rate of cooling after incubation and level of activity at the end of incubation period and the temperature and duration of storage. So cooling is important to control the metabolic activity of starter, and in practice, a warm starter culture is sometimes used to cheese factory to some extent and in the yogurt industry.
Now the second form of starter culture is dried starter culture. So the preservation of starter culture by drying is an alternative method for the culture retention, and development of such process seeks to overcome the work involved in the maintaining liquid starter culture. As you can see, the maintenance of liquid starter culture is quite tedious, and frequent subculturing even leads to sometime loss of plasmid and other undesirable property that may inactivate the starter culture. So using dried starter culture, you can somewhat overcome that problem, and it also facilitates the dispatch of dried culture by post without any loss of activity. The different method used for this dry starter culture are vacuum and spray drying, that is old methods, and this vacuum and spray drying method is old method. It is now not used in the present time. The other method is lyophilization or freeze dried method, and this method is widely used in the laboratories, and freeze drying or concentrated culture, this is also widely used commercially. अरे ये हैंग क्यों कर जा रहा है? Now, what are the factors affecting the rate of freeze dried dairy starter culture? The first factor is growth phase, and starter culture are less sensitive to freezing and drying if cells are harvested towards the latter part of the exponential phase, with the exception of L. dulbrusi subspecies vulgaricus, Lactococcus lactis subspecies crumeris, where they are harvested in early stage of the harvesting phase. नाउ द अनदर फैक्टर दैट मीन्स अगर हम लोग स्टार्टर कल्चर जो होगा, अगर हम सेल को हार्वेस्ट करते हैं उसके लेटर पार्ट में, एक्सपोनेंशियल फेज के लेटर पार्ट में अगर हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं, तब जो हमारा स्टार्टर कल्चर होगा उस टाइम लेस सेंसिटिव होगा. बट दिस देयर इज सम एक्सेप्शन. अगर हम लैक्टोकोकस डल्ब्रुसाई सब स्पीसीज वल्गैरिकस एंड लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज क्रिमेरिस को हम लोग अर्ली स्टेज में ही हार्वेस्ट कर लेते हैं. Now the another factor is pH of the media. Media जो हमारा pH range होता है 5 to 6 होना चाहिए, and this pH is favorable for the high survival rate, and the neutralization and growth of suspending medium is essential. Moisture content, there should be a moisture content of 3 gram per 100 gram. So अगर इससे कम moisture content, अगर इससे अगर ज़्यादा moisture content होगा, then your starter will be less effective, और हम स्टार्टर कल्चर को ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर पाएंगे. Another is the factor which affect the rate of starter culture or preservation of starter culture is type of packaging. Obviously, vacuum or modified atmospheric packing of the dried culture is highly recommended because the preserved organisms are sensitive to oxygen. But the most popular type of packaging material for starter culture is glass vial, and it followed by laminated aluminum foil sachet. Now the another factor which affect the starter culture is the freezing temperature. Freezing culture at -20 to 30 degrees centigrade, and drying at temperature between -10 and -30 degrees centigrade result in higher bacterial activity of the dried starter culture. The third factor is storage temperature. Dried starter culture should be stored at 5 to 10 degrees centigrade, and that show higher rate of survival during prolonged storage than did those stored at the room temperature. Obviously, इन सब का यही है कि हम लोग जितना लो टेम्परेचर पर रखेंगे, हमारा स्टार्टर कल्चर की एक्टिविटी उतने दिनों तक रहेगी. लेकिन जैसे अगर हम स्टार्टर कल्चर को 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, तो वो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा दिन तक बनी रहती है देन अगर हम उसको कुछ मेसोफिलिक टेम्परेचर पे रखते हैं. इसी तरह अगर हम लोग वैक्यूम और मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकिंग करते हैं, तो हमारा स्टार्टर कल्चर जो है ज़्यादा देर तक एक्टिव रहेगा, क्योंकि ये जो हमारे स्टार्टर कल्चर है दे आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन. Now another factor is presence of carbonyl compounds such as pyruvate and diacetyl, which can react with the amino group within preserved cells, can accelerate their death. So it is recommended that these compounds should be separated from the harvested cell. Other is use of cryoprotectant agent. अगर हमें लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे अगर हम फ्रीज ड्राइड कल्चर यूज करते हैं, then suspended media must be fortified with some non-reducing sugar, amino acid, and the semi-carbazate compound. So these are the cryoprotective agent
जबकि तुम्हारे स्टार्टर कल्चर को किसी शॉक से, जो ठंड का जो शॉक होता है, इससे बचाता है. Another factor is rehydration temperature, then can affect the leakage of cellular ribonucleotide from damaged cells, and the optimum rehydration temperature of lactic acid bacteria is recommended to be 20 degree centigrade. ये बीच बीच में तुम लोग एंटर करोगे हमको. Now another form to preserve starter culture is frozen starter culture, and starter culture can be produced by two different routes, for deep or the sub-zero freezing, that is keeping starter culture at -20 to -30 degree centigrade, or keeping at ultra low temperature, that is -196 degree centigrade in liquid nitrogen. So in this case, sterile milk freshly inoculated with an active starter culture is deep frozen at -30 to -40 degree centigrade for preservation as mother or feeder intermediate culture. Such frozen culture can retain their activity for several months when stored at -40 degree centigrade. Such culture have not been replaced by the concentrated frozen type for direct inoculation of bulk starter tank or DVI of milk for manufacture of chews or fermented milk. है ना. इसमें कुछ समझना है कि हमें जो फ्रोजन स्टार्टर कल्चर है उसको हम लोग दो टेम्परेचर पे रख सकते हैं, एक तो -20 टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दूसरा या तो उसको हम लोग अल्ट्रा लो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखें -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो पहला में जैसे बता रहा है कि अगर हम लोग कोई स्टाइल मिल्क ले ले और उसमें हम लोग जो एक्टिव स्टार्टर कल्चर है उस स्टाइल मिल्क को डाल के एक्टिव स्टार्टर कल्चर को हम लोग डीप फ्रीज कर दे -30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसको हम लोग मतलब काफ़ी समय तक हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड इसकी एक्टिविटी कई महीनों तक बनी रहती है ना. और ऐसे कल्चर को हम लोग, अगर सच कल्चर है अब इन सब, जैसे हम लोग -30 टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते थे, तो अब जो है वो हम लोग क्या करते हैं, फ्रोजन टाइप हम लोग डायरेक्ट इनोकुलेशन के लिए और बल्क स्टार्टर टैंक के लिए हम लोग फ्रोजन टाइप को यूज करते हैं, और या तो DVI जो तुम्हारा डायरेक्ट बैक्ट इनोकुलेशन ऑफ मिल्क है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज और फर्मेंटेड मिल्क के लिए. ये आगे तुम्हें सिस्टम 2 और 3 दिखाया जाएगा. अब ये कह रहा है कि फ्रीजिंग कल्चर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैज मेड पॉसिबल द DVI ऑफ मिल्क फॉर चीज एंड yogurt प्रोडक्शन और डायरेक्ट inoculation of bulk starter. System 2 and 3 that we'll discuss later on. The advantage of these approaches are as follows: that this is convenience, and it is culture reliability, and it improves the daily performance and the strain imbalance. It has greater flexibility, better control of phases, and possible improvement in quality. बट डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कि इट इज़ डिफिकल्टी इन प्रोवाइडिंग लिक्विड नाइट्रोजन फैसिलिटी. हर जगह लिक्विड नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगा, एंड लिक्विड नाइट्रोजन महंगा भी आता है, और उसको थोड़ा ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि मतलब वो काफ़ी लो टेम्परेचर, उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए जो तुम्हारा सिस्टम होगा वो हाई कॉस्ट का हो जाएगा. एंड ये ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन स्टार्टर सप्लायर. स्टार्टर तुम जो सप्लायर्स हैं वो कैसा तुमको स्टार्टर्स देते हैं इस पर भी डिपेंड करता है. एंड appropriating of responsibility in case of starter failure. obvious सी बात है कि हम किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो तुम अपने जो मेथड, जो फ्रीजिंग का तुम मेथड यूज कर रहे हो वो तुम्हारे गलत होगा, या तुम्हें स्टार्टर जो सप्लायर है वो उन्होंने सही ढंग से नहीं दिया, ये तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं कर सकोगे. लेकिन ये कन्वीनियंट है और इनमें कल्चर की जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा बनी रहती है. Now this is the production system for bulk starter culture, and ये वेरियस इसके प्रोडक्शन सिस्टम है. जैसे कि इसमें बता दिया 1 and 2 सिस्टम एंड 2 and 3 सिस्टम ये किया गया. तो सिंपलेस्ट जो होगा वो तुम्हारा सिंपल माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक होगा, एंड द सेकंड विल बी द यूज ऑफ मैकेनिकली protected tanks and the propagation of starter culture in a special medium. So 3 method will be followed for the production system for the bulk starter culture. So this is the first method. ये इसको हम लोग बल्क वर्सेस डायरेक्ट टू वैट कल्चर प्रिपरेशन कहते हैं. इसमें जो भी तुम्हारा लायोफिलाइज और फ्रोजन कल्चर है, पहले हम लोग उसको बल्क टैंक में डालते हैं एंड देन उसको प्रोडक्शन वैट में डालते हैं, या तो हम लोग इस स्टेज को हटा के सीधा हम लोग लायोफिलाइज एंड या जो फ्रोजन कल्चर है उसको हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्शन वैट में डालते हैं. तो इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट टू वैट कल्चर प्रिपरेशन भी कहते हैं.
जो सिंपल माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स है, ये तो मतलब कि इसमें इक्विपमेंट मटेरियल जो होते हैं वो जो बेसिकली तुम्हारे लेबोरेटरी स्टेंसिल्स एंड स्टार्टर टैंक एंड जिनका कि सिंपल डिजाइन होता है, उनमें बैच पास्चराइजर, इंक्यूबेटर वगैरह उसमें शामिल होता है। जो अनदर तुम्हारा मैकेनिकली प्रोटेक्टेड सिस्टम्स है, इसको डेयरी इंडस्ट्री में उस स्टार्टर के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए उसको मतलब कि सिस्टम को प्रपोज किया गया है। एंड द वेरियस एस्पेक्ट इसमें है कि द प्रोसेसिंग ऑफ ग्रोथ मीडियम एंड द स्टार्टर टेक्स प्लेस इन अ कंप्लीटली इनक्लोज्ड टैंक्स and the inoculation of starter takes place through a barrier which prevent the entry of unclean air. So इसीलिए हम लोग इसको mechanically protected system कहते हैं. So some example of mechanically protected system are the पहला जो लिवाई सिस्टम है, और इस लिवाई सिस्टम में ये जो टेक्निक है इसमें हम लोग रीयूजेबल पॉलीथीन बॉटल का यूज करते हैं फॉर मदर एंड फीडर कल्चर के लिए। एंड दिस बॉटल जो होता है इसमें अस्टिल रबर स्टील होता है ना। एंड द ग्रोथ मीडियम इज 10 to 12 ग्राम पर 100 ग्राम रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंटीबायोटिक फ्री स्किम मिल्क पाउडर, और हम लोग उसको सेम बॉटल में स्लाइस करते हैं। द स्टार्टर कल्चर ट्रांसफर्ड आर कैरिड आउट बाय मींस ऑफ 2-way हाइपोडर्मिक नीडल एंड द ओवरऑल टेक्निक इज देखो ये है ना तुम्हारा, ये है मदर कल्चर, ये है तुम्हारा फीडर इंटरमीडिएट कल्चर, ये है तुम्हारा टाइम भी कितना जल्दी टाइम खत्म होता है भाई, ये है तुम्हारा मतलब इंटरमीडिएट या जिसको कि तुम लोग सॉरी बल्क कल्चर है, ये तुम्हारा बल्क कल्चर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा मदर कल्चर है, इस मदर कल्चर में भी डायरेक्ट इनोकुलेशन नहीं हो रहा है, एक हाइपोडर्मिक नीडल से हमारा जो स्टार्टर है उसको डाला जा रहा है।